हेलो वेलकम टू आईएसपीडी चैनल्स आईएसपीडी चैनल तरफ समस्त को शुभेच्छा मु प्रदीप सर आउ थे पुणी पे आज स्पेशल दमदार एपिसोड इंडियन इकोनॉमी रो ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़िए पे दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमिक रो ग्रीन रिवॉल्यूशन तो तुम पे बैंकिंग सेक्टर एसएससी ओएसएससी सिविल सर्विस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंडियन इकोनॉमी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर्स सो इंडियन इकोनॉमिक आम पाठ पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन सबुज विप्लव ओके थैंक यू बर्तमान जो पाने जो चैनल टाइम सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर सांग मान शेयर कर ओके स्पेशल आज ओडिया पढ़ा पे ग्रीन रिवॉल्यूशन बा सबुज विप्लव समस्त को बुझापी सुविधा हम देख लुक एट द पिक्चर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन पिक्चर देख पे एपटे फास्ट पिक्चर होती द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंटरनेशनल लेवल बोर्लग एपटे होती ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया होती एमएस स्वामीनाथन ओके बर्तमान स्टार्ट करें व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन फास्ट देख सबुज विप्लव ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन जनरली स्पेशल पे तुम सिविल सर्विस ओएस बहुत कम दब आईएएस भी कम दब स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस जो मैंने प्रिलिमिनरी मेन परीक्षा दौच आरबीआई ग्रेड बी एनी एलआईसी जीआईसी एंड तुम एसएससी मेन बहुत कम दब पे देख व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन समस्त टिके जानी आउ टे आम आलोचना करिया ग्रीन रिवॉल्यूशन माने सबुज विप्लव माने कौन कहूँ देख बुझे फास्ट द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन बढ़िया केमी बढ़ स्पेशल क्या कौ फ्रूटा ना व्हीट एंड राइस गहम आउ धान प्रोडक्शन कि भाव बढ़ टू मेंटेन टू डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज ओके देखो इवेंचुअली इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 1 आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नंबर 2 पेस्टिसाइड्स नंबर 3 हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर माने कृत्रिम सार पेस्टिसाइड माने कीटनाशक हाई यील्ड माने अधिक अमलक्षम मंजी बिहन आ द्वारा कौन हम ना अधिक प्रोडक्शन हम बिगिनिंग इन द मिड ऑफ 20th सेंचुरी माने स्पेशली 1960 टू 70 1960 मसीहा भितर क्रांतिकारी परिवर्तन होता रिवोल्यूशनरी चेंज होता स्पेशली कौन टू मीट द फूड द ह्यूज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज ओके तो ऑब्जेक्टिव देखो कौन पे देखो द मेन ऑब्जेक्ट इज टू मिनिमाइज द फेमिन जो खाद्य अभाव देखा दुर्भिक्ष इन मेनी नेशंस largely increase food production okay by effectively terminating subsistence agriculture and replacing with commercial agriculture okay commercial agriculture replace करके subsistence केमति बंचिबा ता ऊपर बेसी ध्यान दिया ता दैट इज द एम ओके देखो देन कम टू द फाउंडर ए ग्रीन रिवॉल्यूशन नो फाउंडर किए द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इमेंसली funded by the Rockefeller Foundation, the International Rockefeller Foundation, the Ford Foundation, and some other major agencies. Rockefeller Foundation, America, the Ford Foundation, America, and other some major agency, NGO, माने मिसिकी एटा केम डेवलप करिवा ग्रीन रिवॉल्यूशन टा फाउंडर मान थिले ओके देन इंट्रोड्यूस इन इंडिया देखो माने भारत वर्ष रे केम इंट्रोड्यूस कि देला The technology of green revolution in India originally introduced in states of Punjab. परीक्षा पिलाने पढ़े को स्टेट रे पिलाने स्टार्ट हेतिला स्पेशली इंट्रोड्यूस इन आपण मानकर पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश दिल्ली पाखा पाखे फरीदाबाद ये सब जिनस डॉक्टर नोएडा इस अंचल रे फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन तक इंट्रोड्यूस कराइला कोन स्पेशली व्हीट ना गहम अधिक अमलक्षम गहम चाष उर्वर माटी कौट अच्छी ना गैंजेटिक प्लेन
शिवालिक अच्छी पिला जोग्राफी पढ़ते शिवालिक्स पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश the lesser Himalayas, the foot of the Himalayas, which are very fertile lands. These states को भी देखो Indo-Gangetic plain, Indo-Gangetic Ganges समतल भूमि, उर्वर पट्टुमाटी alluvial soils. Okay, वर्तमान the soil in the regions are generally sandy loam, माने बालिया, sandy loam to loam the texture, deep alluvium, poor organic matter contents. And alkaline in the reactions. Okay, so this is urbara bhumi sakase Gangetic plain na Ganges samatala bhumi ra balya mati urbara mati especially wheat ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ. Okay, so next what change we are brought by the green revolution in India. Green revolution introduce India ହେଲା कौन सब change ହେଇଥିଲା देखो special देखो पिला माने first point देखो green revolution covering the period from just go to 1960 to 70 and extend to 70-80 transform the situation of Indian country from food deficiency क्षेत्र बहुत खाद्य अभाव दिखाउतला. Okay, खाद्य अभाव थिला one of the world leading agriculture nations. Okay, भारत होची world रा leading agriculture nations after China. Okay, देखो the term green revolution largely applied to success agricultural technique in many developing countries. Developing countries especially it introduced कराला because developing country large population को खाद्य जोगाया ପାଇଁ especially हमारा high yielding अधिक अम्लक्षम seeds व्यवहृत ହେଲା. India is one of the developing countries where green revolution most successful. Okay, तो plus what are the main element of the green revolutions? Note करो पिला माने three main elements of green revolution. तीनटा elements देखो. Number one कौन देखो expansion of farming area on a continuous basis. Expansion of farming area on continuous basis. जो अनुर्वर जमी सब थिला barren land थिला ताकू हमें farming land रे convert करागला. The area of land under cultivation drastically increased from 1947 after independence. But this is not adequate to meet the rising demand. किंतु हेतिका पर्याप्त परिमाण हेला नाही. So other efficient methods were also required. Also the land under the cultivation had to continue. Therefore green revolution was continued with this quantity expansion of farming area. Farming area ऊपर extend के देबो तापर बेसी ध्यान दियाला. Okay, number one. Number two ला double cropping in the existing farming area. ये जमी रे जो लैंड रे डबल क्रॉपिंग दी तरह क्रॉपिंग 50 करागला अमल कई. ओके, प्रोड्यूस दी तरह प्रोड्यूस कराला डबल क्रॉपिंग. देखो डबल क्रॉपिंग वाज मेन फीचर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन. वर्ष को दी तरह प्रोडक्शन करा. आगु वर्ष को थरे कराउतला डिपेंड अपॉन द मॉनसून्स डिपेंड ऑन द रेन्स. किते एबे कैनाल फाइनेंशियल सिस्टम हला बोरिंग हला लिफ्ट इरिगेशन द्वारा वर्ष को दी तरह चाष करागला. In the place of one crop season per year, the decision was made to introduce 2 crop seasons each. Yes. Okay. The cropping season per year relied on the fact there is only natural monsoon. Depend each year, but decision was made to have 2 cropping seasons per year. That is one natural monsoon and other artificial monsoon. Artificial monsoon means using the canals, into the canals, river water we use and the lift irrigations. It is lift irrigation underground water taka me use kare. So amra artificial monsoon kale ବର୍ଷକୁ ଦିଥର ଚାଷ କରାଗଲା. So obviously production ବଢିବ ତାପରେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଲା. ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କେମିତି କରାଗଲା. ଡ୍ୟାମ୍ସ ୱେଆର୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍, embankment ଡ୍ୟାମ୍ ସବୁ ତିଆରି କରାଗଲା. ଓକେ, simpler irrigation facilities also introduced. Third ହେଲା using HY ମାନେ କ'ଣ HIY ମାନେ high yielding seeds which improve genetics. Genetic ଉପରେ improve କରିକି high yielding seeds ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା. This is the most important scientific aspect of the green revolution. It is very important. High yielding seeds is very important. देखो पिलाମାନେ next कौन the Indian Council of Agriculture Research
ACAR ହେଲା ICAR Indian Council for Agriculture Research was reconstructed in 1965. Okay, 1965. Then again in 1973. Very important manaka. Note it. 1965 रे हमारा इंडिया रो ICAR restructure ହେଲା and then again in out modify ହେଲା 1973. Okay, the Green Revolution introduced new strains of high yielding variety seeds, especially wheat and rice. manaka. Wheat and rice, but also millet भी यूज करागा इंट्रोड्यूस करागा ओके बट स्पेशली ग्रीन रिवोल्यूशन प्लान पड़िबो दी स्पेशली व्हीट एंड राइस द मोस्ट रिनाउंड हाई यील्डिंग सीड्स वाज K68 एंड डिवर्सिफिकेशन ऑफ व्हीट सेते बळे K68 रो सीड्स यूज कराउतला ना देतला K68 दैट इज द नेम ऑफ द हाई यील्डिंग सीड्स ऑफ व्हीट ओके देन कम टू a significant role in the world significant note karo dekho a significant role in the world green revolution world re ki bhali bhagare impact pakare dekho the green revolution played a significant role in the providing food and steadily growing population of the world number 1 okay during the 1950 to 60 1950 मसीह 60 मसीह very important note is Norman Borlaug Norman Borlaug कौन कहते the father of international green revolution पिला मन रख father of green revolution दीटा अछि बट इंडियन father of national कौन होचे green revolution father Indian out of international level होचे Norman Borlaug very important Norman Borlaug होचे जने scientist agriculture scientist and his co-worker introduced dark wheat strains while working at international maize and will improve center in Mexico. Manaka. Norman Borlaug was a US scientist, but setawale 1950-60 wale Mexico Valley re seti se testing korthile koti especially international maize and wheat improvement center koti Mexico अछि Mexico Valley very useful for agriculture सेठी से फास्ट कौन कले टेस्टेड कले ओके देन बोला एडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन देखो पिला देखो एडवांटेज कौन देखो नंबर 1 होची कंसिस्टेंट ऑफ फूड सप्लाई ग्रीन रिवोल्यूशन ला परे अधिक अमलक्षम होला परे कंसिस्टेंट ऑफ फूड सप्लाई अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ मेड बाय ऑक्सफैम द वर्ल्ड इज इन पोजीशन टू प्रोड्यूस almost 20% more food and what is presently required to provide every person with a balanced diet number 1 मन consistent food supply है second ला अधिक प्रश्न ला पर कौन ला cheaper consumer price जो थिला से बर्तन सस्ता है अधिक प्रोडक्शन ला पर to meet the demand टाको supply अधिक ला demand टाको meet करला so revolution enabled farmer to produce more from their existing farming area creating bigger harvest with an equal quantity of work okay this is कौन ला ता कौन ला ना minimize the production cost which eventually lower the consumer cost while profit of the farmers actually reduce okay farmer profit बढ़िला third देखो opportunity to safeguard the environment को safeguard कला केमिति कर देखो as we are in the position of produce the more food from the existing farming area during the green revolution there is less requirement of convert the other type of land into more croplands and feed growing population for example la deforestation कम area भितरे less area भितरे more produce होला twice in a year and high yielding use गला so हमर जो पड़ू चाष करा होतला deforestation ताको बंद कराला so that for environment ताको हम safeguard करले okay then created more jobs आप लोग कहला advantage more job होला definitely production बढ़िले more job होबो the most common type of job that is available in the developing world is the agriculture developing country रे agriculture पे बेसी डिपेंड करंती so more job के अंदर देखो 2 out of 3 jobs worldwide are impacted in the directly or indirectly in the agriculture work हम बा पृथ्वी रे आउ 3 माने 2/3
ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନିୟୋଜିତ okay involved in agriculture works. The more jobs the people enjoy more income. With more income there is opportunity to create a growing economy, but obviously okay this create more opportunity for people to pull themselves out of poverty over time. Poverty daridryaru दूरीकरण रक्षा पाइले ओके नंबर 5 देखो एडवांटेज कौन ना हार्वेस्ट मोर फ्रॉम सिंगल फील्ड गोटा फील्ड रु अधिका अमल हला प्रोड्यूस काहे कि ना ट्वाइस इन अ ईयर द ग्रीन revolution largely benefited Indians. The Indian annual rainy season it was impossible to grow more than one crop annually कारण वर्षा पर मानसून पर डिपेंड कराउतला मानसून खराब पले ड्रॉट हेउतला सो इरिगेशन द्वारा different type of irrigations canal dam and lift irrigation द्वारा बढ़ाला ओके देखो ये वेरी इंपोर्टेंट प्ले नोट करो डिड यू नो आपण मन जानि छंती कि कोन कार्बन एमिशन इज लार्जली इंक्रीज ड्यू टू ग्रीन एमिशन डिसएडवांटेज पिला मन अछि एडवांटेज जति कि डिसएडवांटेज भी अछि कोन ला ना ड्यू टू यूजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स कार्बन एमिशन लार्जली इंक्रीज हला बढ़िला इंट्रोड्यूसिंग कोन ला ट्रैक्टर बिलर हळ बुलेला चाष कला जा पर कि कार्बन एमिशन हला using the technology breeding of high yielding variety of focus mainly cereals and staple crops okay in 1960 India is facing famine situation this compelled the country to join the green revolution okay बर्तमान देखो significant of green revolution very important ये chapter पे पहले आसला कौन what are the significant of green revolution very important देखो पहले note it in 1963 Norman Borlaug जो कहते famous agricultural scientist of USA first introduced genetically modified high yielding wheat in India okay India रे से food as करते पिला माने पंजाब हरियाणा and western part of UP देखो नॉर्मन बोरलॉग the scientist अगर जन्म इधर के पे 1914 रो died in 2009 Dallas Texas USA he was known as the father of green revolution international level देखो American agricultural scientist plant pathologist and winner of Nobel Prize peace in 1970 मैंने 70 मसीहा से Nobel Prize पाई थे स्पेशल green revolution पे है known as the father of green revolution एटा international level पे लाने international level रा father of green revolution के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग helped lay the groundwork for agriculture technologies advanced and alleviated world hunger okay देखो Borlaug studied plant biology forestry at the University of Minnesota and PhD in plant pathology in 1942 okay but it's important है important question से wheat production in Mexico multiplied the threefold owing to this and other varieties. So Mexico Valley से first tested कले कोना जो green revolution special wheat तक. After Borlaug's success in Mexico, the Indians and Pakistani government एटा तांकर success Mexico रे हला परे से introduce कले कोठी Indian और Pakistani government requested his assistance. Pakistan और India government तांको request कला to help. Okay, and the support of Rockefeller Foundation कहतली अमेरिका and FAO very important FAO 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 चुड़ा UN रा जाति संघ रा agency units of the United Nations Borlaug began his agriculture revolution in Asia especially India and Pakistan देखा okay India and Pakistan facing food shortage at that time due to rapid population growth जनसंख्या बढ़िया फल रे खाद्य अभाव होतिला the importation of Borlaug's dark wheat seeds the mid of 1960 was responsible for 60% increase in harvest जति की production होतिला now 60% बढ़िला डेढ़ गुना अधिक हला okay so agriculture self sufficient now India is self sufficient अगर बहुत गम हम आनता ऑस्ट्रेलिया we are importing from wheats from Australia and USA but now India is self sufficient
पर्याप्त परिमाण गहम बर्तमान अच्छी इंडिया बाहर को सप्लाई कर इंडिया इज एक्सपोर्टेड द wheats now. India is now the second largest wheat producer in the world. His work developing countries, especially on Indian subcontinents, estimated to have saved as many as 1 billion people from starvation, 1 billion 100 crores, and death. Borlogo also created wheat hybrid known as important critical hybrid seeds now, and its method were used by other developed new variety of high yielding produce rice. Increased yield resulting from Borlaug's new strain empowered many developing countries, though their use required large amount of chemical fertilizer and pesticides. Large amount of chemical fertilizer and pesticides use कराएगी अधिक अमल करागला. That also harmful, but now that is a disadvantage. Okay, but then आशा पिला माने बोरलॉग कौन कले? बोरलॉग सब डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल इंटर अमेरिकन क्रॉप प्रोग्राम, इंटर अमेरिकन फूड क्रॉप प्रोग्राम 1960-63, and as the director of international maize and wheat improvement center, Cudachi, Mexico City, the capital of Mexico, 1964 to 1979. Okay, the director of international maize and wheat improvement center, Mexico. In 1986, Borlaug created World Food Prize, a very important pillar. World Food Prize प्रति वर्ष दौची किए हम यूएनओ दौची यूएनओ जातीय संघ दौची कहानार स्पेशल ना बोरलॉग ताको स्टार्ट कले 1986 okay, very important to honor individuals who have contributed to improving availability and equality of food worldwide. Okay, मन का पिला माने हमारा वर्ल्ड फूड प्राइज प्रथम भारतीय किए पाइले एमएस स्वामीनाथन. ओके, ए वर्ष पिला माने जने वुमेन पाइछन ओडिसा रो सम साहू ओडिसा रे पाइछन लेडीज जने वुमेन्स वर्ल्ड फूड प्राइज पाइछन ए वर्ष 2023 रो. ओके, 2023 रो वर्ल्ड फूड प्राइज वेरी इंपोर्टेंट मन रखो. वर्ल्ड फूड प्राइज 2023 के पाइछन ओडिसा रे जने व्यक्ति पाइछन पर्सनल लेडीज वेरी इंपोर्टेंट वर्ल्ड फूड प्राइज. ओके, देखा बर्तन. He also taught Texas A&M University, where Norman Borlaug Institute of International Agriculture was established in 2006. तांका नारे नॉर्मन बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर स्टार्टिंग गला. देखो ऑनर्स अवार्ड कौन पाइले? नंबर 1 अछि प्रेसिडेंशियल मेडल फ्रीडम पाइले 1977 में. देन नेशनल मेडल ऑफ साइंस 2004. थर्ड ला कांग्रेसनल कोन गोल्ड मेडल 2006 रे. तापर यूनाइटेड नेशंस ऑफ फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कोन दला एग्रीकोला मेडल 2010. नंबर देखो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वेरी इंपोर्टेंट पिला माने एटा परीक्षा बहुत थर पकोची. देखो एमएस स्वामीनाथन, लुक एट द पिक्चर्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया. एमएस स्वामीनाथन फ्रॉम तमिलनाडु, साउथ इंडियन फ्रॉम तमिलनाडु, मनको birthplace Tamil Nadu, and the title of father of green revolution in India due to his significant role in introducing high yielding crops resulted in increase the agricultural productivity. Okay, the father of green revolution, India's agricultural revolution, M.S. Swaminathan is an important figure known as the father of green revolution due to his significantly contribution in the Indian agriculture sectors. Because of his clever idea, he is a very clever person. He made an inedible mark in the nation's food security and agriculture prosperity. Okay, देखो early life देखो पिला मना सो तंकर brief history, early life and education. एमएस स्वामीनाथन कर कौन देखो बर्थ डेट ला 7th August 1925, बर्थ प्लेस ला कुंभकोणम तमिलनाडु. माने तो ये जस्ट कहते तमिलनाडु साउथ इंडियन पीपल से. ओके,
As pursuing his education in India, he continued his academic pursuit at University of Cambridge. Cambridge University पढ़ुଥିଲେ से and PhD in genetics in 1952. Okay, genetics right? So the genesis of green revolution देखा पिलाने Swaminathan's legacy find its roots in his development of high yielding variety of wheat during 1960. এটা পরীক্ষা পকে মানে গ্রিন রিভলিউশন ইন্ডিয়া কেবে হইতরা in the mid of 1960. Second point is collaborating with scientists like Norman Borlaug. Norman Borlaug সাথে collaborate করি he played a pivotal role averting the potential mass famine in India. ଆଗରୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଉଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଜାଣିତେ ପିଲାମାନେ ଭେରି ବିଗ୍ ଫେମିନ୍ଟା ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା. This breakthrough marked the genesis of the green revolution in the country, earning Swaminathan his distinguished title. Okay, the path of transformation Swaminathan worked in many fields, from research roles to administrative position. Civil service, civil servant, working within the Indian civil service, he harnessed his expertise to introduce Mexican semi-dirt wheat plant in Indian fields. Okay, his efforts bridged the gap between traditional and modern farming practice, facilitating more receptive atmosphere, innovative agricultural methods. Then we come to leadership and global impact. He served as the Director General of Indian Council of Agricultural Research. Say ICAR Director General thile kepe 1972 to 79 7 ବର୍ଷ ଥିଲେ, influencing the key agriculture policy. Later he assumed the role of Principal Secretary to Indian Ministry of Agriculture and Irrigation from 79 to 80. Okay, third he held the position of Director General at the International Rice Research Center, IRRI, International Rice Research Center by IRC 1982 to 88. এটা কোড প্ল্যান আছে ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ সেন্টার কোড আছে প্ল্যান ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর সরি এটা হচ্ছে প্ল্যান এটা হচ্ছে মানিলা আছে ফিলিপাইন্সর ক্যাপিটাল মানিলা আছে মানিলা the capital of Philippines. Capital of Philippines is International Rice Research Center Institute. Okay, very important. His commitment to conservation led him to became the president of the International Union for Conservation of Nature and Natural Resource in 1984-1990. International Union for Conservation of Nature and Natural Resource. Okay, in 2001, he chaired the Regional Steering Committee of India-Bangladesh Joint Project on Biodiversity Management in Sundarban World Heritage Site. Sundarban is world delta Sundarban mangroves. Award number 1 देखो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर कौन देगा स्पेशलिस्ट साइंस in 1961. तापरे नंबर 2 पद्म विभूषण पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया आफ्टर भारत रत्न. ओके, थर्ड कौन देखो रमन मागासेसा अवार्ड्स 1971 for public government servant. Raman Magsaysay Award की दौची Raman Magsaysay Award. Okay, the Asian Nobel Prize Raman Magsaysay Award. Philippines President Raman Magsaysay ना रही थी. Okay, Philippines government that is called Raman Magsaysay Award. The second Nobel Prize of Asia. Second highest prize after Nobel Prize. तापर कौन पाइले देखो यूनेस्को
ୟୁନେସ୍କୋର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଲେ 1999। ओके नंबर 4 ओके थैंक यू पिलाने आज हम पढ़िला में ग्रीन रिवोल्यूशन आईडिया हला फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन इंटरनेशनल ग्रीन रिवोल्यूशन केबे हितला तापर ठीक आईडिया हला ग्रीन रिवोल्यूशन पिलाने पढ़े पढ़े स्पेशली फॉर व्हीट पढ़िबा स्पेशली फॉर व्हीट पे फेमस ओके देन राइस आसीबा सो फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन रा फादर के हमरा होसन के एम एस स्वामीनाथन नेशनल लेवल रा इंटरनेशनल लेवल होसन के पिला माने नॉर्मन बोर्लाग ओके अमेरिकन